Okay, so we are proceeding ahead with the third group task, and this group task are being covered for chartered accountant students who are going for HPCL. That selection is on the basis of interview and group task. So let me share that task with you on the screen. Before that, let me tell you group task. It's there are three parts of that. Number one is a introduction, then you have to discuss, and then you have to conclude. So in entire group task, you have to behave as a team member. You have to solve a riddle. You have to give a solution which should be you should reach the solution through mutual consensus. So you have to discuss with others and come to some kind of consensus, and you have to provide the solution to that particular case study which I'll provide you. And in the group task, marks are given on the basis of how good are you in interacting with others, and what kind of ideas you are providing, what kind of solution you are providing, your problem solving skills. That is the criteria on the basis of which you are given marks. And entire group sinks or swims together. Entire group also is given some credit. So if the group is behaving very well, and if you people are giving solution nicely, then entire group gets the credit for that. But suppose you are fighting and you are not reaching consensus, or you are not talking to others properly, then you will lose as a group also, as individual also. Try to be part of group, don't try to be away from the group. Try to be part of the group, and try to listen to them, and your views provide them, but at the end you are all agree to the common solution. That is something which is required in group task. And listen to others, you will get sufficient time. They give you sufficient time for this task solving, so you will have sufficient time, need not to be in hurry. Communication skill is not checked in the group task. It is not that I want to check your communication skill. I want to check your problem solving skill. For that you need to think of very practical problems, solutions of the problem, and you have to take entire group along. So your team spirit and your problem solving skills, these two things are checked, not your communication skills. So keep that thing in mind, and solve the riddle which I provide you. So now here comes the group task number 3 of this particular session for group chartered accountants, that is for HPCL, and this is the task which is given to you. So let me read out. If you cannot see this, I'm sure you can see this, but let me read this out also. There is a river which is flowing adjacent to HPCL plant. The river base area falls within the jurisdiction of HPCL land, and your boss has asked to make some detailed project report, DPR, suggesting how can that area be utilized. Maybe that area as of now is not being used. Suggest the steps you will take to develop this area, as well as the cost estimation for that development. How much will be the cost estimation for that, and how would you like to develop that area? That is to be discussed here. So please go through for a couple of minutes, and then we start discussion. Can I interrupt? Hello. Yeah. Actually, I'm from for IOCL, sir. Can I proceed this? Yes. IOCL, there is a group task. You be here and solve it. Okay. Okay.
Okay, so I think now it can be started. So any one of you can start the task, solving the task. Myself, Rajveer Singh, thanks for providing me this opportunity to present the case study given to us. It is very interesting case study. The case study is that the river is flowing adjacent to our HPCL plant. Our our director has asked to prepare a detailed project report that how can we use the area and develop it for the HPCL plant, and we have also to prepare estimated cost and find the estimated cost for the development. So basically, I think we can make park around that area because क्योंकि आप नॉर्मली देखोगे जैसे कि जयपुर में ये सिस्टम हो रखा है कि एक रिवर, वैसे तो पहले रिवर नहीं थी, अब उसको रिवर में कन्वर्ट करके उसका पास का एरिया साइकिलिंग या ट्रैकिंग एरिया बना दिया, जिससे बहुत अच्छा उससे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। तो बेसिकली शायद वो काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। गाइस हम और काम कर सकते हैं, रिवर वाटर को भी यूज में ले सकते हैं। अगर रिवर वाटर को यूज में नहीं लेना तो उसके लिए हम कोई स्पोर्ट्स पार्क बना सकते हैं या फिर कुछ अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, जो कि HPCL कॉलोनी में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए उस पार्क या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक्सेस हो सके। हम मोस्टली मतलब ट्रैकिंग एरिया या फिर उसके लिए पार्क बना सकते हैं उसका। I think good evening guys, my name is Kiran and I would like to share my point of view. Like we have been given an empty land that's falls under HPCL registration. As we know, HPCL is a petroleum mining company and a refinery company, and there will be a lot of waste that has to be left into the river. So utilizing the present technology, we can develop a water treatment plant before the water actually gets diverted into the river. So in this way, we can be more sustainable, not only for the environment, but also for the society, because there is a lot of marine life and also human life depending on that, because the river water is also used for cultivation of food, grains and all. And as it is closely adjacent to the river, I would not suggest any buildings or offices to be built, because the river is actually like flood prone, and we cannot guarantee the strength of the building. And as well एक्चुअली हम कुछ प्लांटेशन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेजिटेशन वगैरह, क्योंकि फ्लड तो है। उसको हम रिवर वाटर को, जैसे ये किरण ने बताया कि रिवर वाटर को हम एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर वाटर का HPCL प्लांट में ही यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा HPCL प्लांट में जो भी वाटर की कमी हो रही होगी वो उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, या फिर अगर पहले से ही इतना वाटर अवेलेबल होगा तो कहीं और से वाटर कट करके यहाँ से वाटर की सप्लाई मेंटेन की जा सकती है। एक्चुअली में लैंड डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है कि हम लैंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं एक्चुअली में। आई थिंक मेन वही है, उसके एडजेसेंट में जो उसके रिवर है, ये ऑल टाइम रिवर है, सीजनल रिवर है। जैसे किसी बरसात में अगर पानी सिर्फ रिवर में आता है तो वो सीजनल रिवर हो गया, या फिर हिमालय फ्लोइंग रिवर है तो वो ऑल टाइम रिवर होगा। सबसे पहले ये डिटरमाइन करने के बाद देखना पड़ेगा वो फ्लड प्रोन एरिया है कि नहीं। अगर वो फ्लड प्रोन एरिया है तो बेटर है कि हम लोग कॉर्नर में पेड़ लगा दें, क्योंकि अगर पानी का वाटर लेवल बढ़ता है तो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेगा और वो आने से पहले HPCL प्लांट में जाने से पहले उसको उस चीज को रोक देगा। उसके बाद डैम बना लेना चाहिए, ताकि उसके बाद जहाँ पर वाटर होता है कोशिश करना चाहिए कि HPCL प्लांट है तो HPCL प्लांट का वेस्टेज कारण होता है तो वाटर पॉल्यूट हो पाए, तो बेटर है कि वहां पर हम लोग कोशिश करें कि वहाँ वाटर ट्रीटमेंट, जैसा इन्होंने वन ऑफ द मेंबर ने बोला कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना देना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर वेस्ट जाता है तो वो पॉल्यूट कर सकता है और हो सकता है आगे जाकर जो रिवर का वाटर हो वो फार्मिंग इरिगेशन के लिए या फिर पॉपुलेशन के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। आई एग्री विद राजवीर। मैं राजवीर के पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि हो सकता है उस पानी में कुछ जीव भी हो जो उस पोल्यूटेड पानी की वजह से डेंजर में आ सकते हैं। मरीन जो लाइफ है वो शायद डेंजर में आ रही हो, कुछ अगर उसमें पोल्यूटेड वाटर पीछे से आ रहा हो, कुछ उसमें केमिकल्स आ रहे हो कि कोई फैक्ट्री से। आई थिंक डैम बना लेना चाहिए ताकि बाद में भी यूज कर सकें। और अगर हम आइडिया है, इस बैंकेट हॉल भी बना सकते हैं फॉर पार्टीज। आई थिंक हमें सबसे पहले टीम बनानी चाहिए, एक HPCL के डायरेक्टर की तरफ से एक टीम का क्रिएशन होना चाहिए जो उस लैंड की इंक्वायरी करे कि किस तरीके से हम उसको मोर डेवलपमेंट करे जा सकते हैं। You have to know what is the requirement for that land actually.
we should also see, is there any requirement for the company to utilize that land in a proper manner? We should also think like that. Like, If there is any requirement. So what needs so actually? we have to take initiative. Survey. Like being in HPCL, we have to set an example for other companies by being more sustainable. I think like water treatment is a very good plan. In Yes, addition yes, to that, it also encourages first all of other all, companies. We can First of all, we should think about the around fund, that. how much fund we have. According to that, we should decide that what should be done. Just like one member said that water treatment plants or etc. नहीं दिव्या एक्चुअली अपने को कॉस्ट एस्टिमेशन अपने को खुद को करना है. Yes, We have to develop a plan and then we have to give the cost estimate. जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसका जो डिसीजन एचपीसीएल के पास है, तो आई थिंक एक और काम कर सकते हैं. अगर इसका वाटर हम लोग यूज करना है तो बेटर है कि वहाँ जो लोकल जुडिक्शन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा, उनसे पहले जाके हम लोग परमिशन लेने कि इसका वाटर यूज करना है, और उसके बाद चाहे तो हम लोग कुछ पोर्शन एचपीसीएल प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं. हाँ भाई, वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके फिर डाल सकते हैं प्लांट में. एक्चुअली वो वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक टाइप से उसको वाटर को प्यूरिफाई करना है. वेस्ट ट्रीटमेंट तो एक्चुअली ये होता है जो अपना यूज किया हुआ पानी जा रहा है और उसको ट्रीट करते हैं. ये एक टाइप से प्यूरिफाई करना ही है. जैसे कि रिवर में मोस्टली क्या रहता है कि पानी इतना खराब नहीं आता. जैसे ओशंस में तो क्या है, ज्यादा सोल्टी वाटर रहता है. रिवर में वाटर ऑलमोस्ट अच्छा रहता है. कुछ केमिकल्स या फिर कुछ जैसे कुछ हम वहाँ पर हम एक्चुअली में वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के सिटी में भी अगर वाटर सप्लाई कर सकते हैं. एक्चुअली में इसके लिए प्योर वाटर ज्यादा एचपीसीएल करना पड़ेगा कि एचपीसीएल में मतलब एचपीसीएल अपनी तरफ से मार्केटिंग करके उससे प्रॉफिट बना सकती है. तो एचपीसीएल प्लांट लगा वाटर स्टोरेज के लिए भी वहाँ पे कुछ कर सकते थे, तो वो बाद में हमारे एचपीसीएल की और आसपास की जो एरिया है वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमें ये एंश्योर, जैसे एचपीसीएल में हम I would like to disagree with the point because HPCL plant is just adjacent to the river. So whenever we need the water, we can directly get it from the river itself. So I don't think there is a need of any water storage tank and all. And I would like you guys to think about more sustainable manner and give up any better ideas than this. This water which is purified can be utilized for our employees also. एक तो यहाँ will be very much useful for our employees. guys, water तो we need to take two water plants, two water purifier plants. What is to be taking the water? राजवीर एक बार शिवा को बोलने देते हैं, उसने अभी तक कोई सजेशन नहीं है. Yes. Actually, what I'm expecting is firstly we need to it will be better if we can take a water purifier of two. One is to be collecting the river water from the and using if the water is can be used for the HPCL plant, we can use that. And another water purifier we can take that and if after the HPCL work is done, we'll be having wastages. So we can before dumping the whatever wastage in the river, we can take the wastages and store there, and we can take after building some huge amount, we can dispose it off. So that way we can. Guys, I think ये तीन solutions dispose it regular on regular basis. We can dispose it off. So after making it a some level, like if every day we are paying 10 units here. So after we'll be keeping some after 100 we will be disposing the entire thing. So 10 days we can dispose it, and with this we can make some cost benefit analysis, and we can do that, and we can use that water, and if possible we can use for the local for our if that water is very good, we can use that for HPCL for water consumption. As you are saying that we can even take the help of that district. We can even we need to take permission from the GHMC. So that I am thinking. So we can whatever the cost that we need to have the permission for the construction, all this. That's my point I was thinking. Yes. I want to add one point to the Shiva.
कि अगर हमें वाटर को यूज नहीं करना है, जैसे एचपीसीएल प्लांट में भी यूज नहीं करना चाहते और ना ही लोकेलिटीज के लिए भी यूज करना है, तो इस रिवर वाटर को कहीं दूसरी रिवर्स में डिस्चार्ज करके उस एरिया को हम पर्टिकुलर या फिर पार्क बनाने में या फिर बैंकेट हॉल इस टाइप की एक्टिविटीज करने में यूज में लिया जा सकता है, जिससे कि जो भी कॉलोनी एचपीसीएल कॉलोनी के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट की जा सके। और मेरे को लगता है कि अपने को क्या है कि वाटर के बारे में ज्यादा यूज नहीं करना, अपने को लैंड है उसके पास में, उसका क्या यूज करना है, मेन उस पे है अपना फोकस, उस पे रहना चाहिए। आई एड वन पॉइंट कि वो आप जो वाटर का यूज करके वहाँ पे जो एचपीसीएल प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बना के, ताकि जो बाहर से जो एचपीसीएल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बनाना ही तो, ये डैम बनाने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट मतलब कि अपने ये फिजिबल नहीं रहेगा, ये कुछ वो एरिया यूज करने के लिए है जो उसके पास एडजेसेंट है, उसका सॉल्यूशन अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन परमिशन मिल जाए, कुछ फंड गवर्नमेंट पास करे, कुछ हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अगेंस्ट कुछ मतलब कोऑपरेट करे उसमें, तो एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, प्लस जो जीरो कार्बन एमिशन है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एचपीसीएल का। वो तो हम लोग ऐसे भी सीएसआर बेसिस पे करना है, तो हम लोग चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं अगर। और ये जैसा कि रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर में डैम वगैरह बनाया, तो करीब 200 से 300 करोड़ के आसपास मिनिमम खर्चा, और 2 से 3 हजार के आसपास जा सकता है नॉर्मल खर्चा। वो आई थिंक एचपीसीएल का प्रॉफिट 7,000 करोड़ मान लेते हैं, 5% भी होगा, 300-350 करोड़ ये एलोकेट तो कर ही पाएगा आई थिंक, मेरे सोचने में। उसके लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हमें लैंड देखना होगा कि लैंड की कितनी है। अगर हमारे पास लैंड की इनफ नहीं है तो फिर हम डैम नहीं बना सकते हैं। एक्चुअली देखो डैम से भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने so HPCL is not into construction dam and that's a very different scope. हाँ वो पूरा अलग हो जाएगा, we won't be अलग हो जाएगा, we are talking about HPCL. We would be required hundreds of acres of land to build a dam. So what I was thinking, we'll be taking the water purifier. It can be used to, I think, water treatment, as many of us agree, would be a better. चलो मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप उससे एग्री होते हो तो। मेरे को लगता है कि जो लैंड है, बेसिकली मैंने जितना अपने बीच में डिस्कशन हुआ, मेरे को लगता है कि उसमें 2 काम कर सकते हैं हम। एक तो पार्क वाला, जिसमें अपन साइकिलिंग एक्टिविटीज, और उसके साथ ही साथ में हम कुछ एरिया में वाटर प्यूरिफाइंग जो करते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं। जो एरिया मतलब कि वो जो पार्क है वो शायद हम पब्लिक के लिए भी ओपन कर सकते हैं और खुद के एम्प्लॉयज के लिए भी ओपन कर सकते हैं, तो एक दोनों चीज के लिए बेनिफिट रहेगा वो। Since it is very adjacent to a river, it will be a scenery also, very good scenery for all the employees. It will be a recreation for them, it will be a refreshment for them. So it's a very good idea. उसको अगर सोलर पार्क बना के उसको वाटर प्यूरिफाइंग ट्रीटमेंट भी वहाँ प्लांट बैठा के सोलर पार्क बना दे, जैसा कि एचपीसीएल का ऑलरेडी 100 मेगावाट का पावर प्लांट बना हुआ है कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ एचपीसीएल का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। प्लांट बनाने के लिए कितना एरिया अवेलेबल है? सोलर पार्क, it all depends on the land what we have. सोलर पार्क कम्युनिटी हॉल भी बना सकते हैं ना, बिल्डिंग के ऊपर भी लग सकता है सोलर प्लांट तो। Guys, I want to add one point. recreational activities के लिए कोई कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं, एंड और वही एक बैंकेट हॉल्स बना सकते हैं फॉर पार्टीज। तो इन दी पार्क ओनली वी कैन, हम इसके लिए अगर ये इसकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं हम, तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं। Yes, so in the park only, we'll be allocating some part to some recreation. You are saying that we can take that part. The park only we can kept as it's some space for that recreational activities, and some part we can if the land is enough to build, so we can use some part for the park part, and some part we can use for the water purifier. That whatever I was saying. So water we can use for the वाटर प्यूरिफायर के लिए एक्चुअली, क्योंकि वाटर प्यूरिफाई करना है, ट्रीटमेंट नहीं करना, तो इसलिए क्या छोटी स्पेस भी काम आ सकती है, मतलब बाकी में पार्क जो बैंकेट छोटे टाइम वाटर प्यूरिफाई we can do एक साथ इतनी सारी चीजें बनाना। वाटर ट्रीटमेंट लगा कि शहर में वाटर सप्लाई भी तो कर सकते हैं एक्चुअली में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के हम एक्चुअली में सिटी में अगर प्योर वाटर सप्लाई कर पाए तो वो भी हो सकता है, सिटी की वाटर सप्लाई प्रॉब्लम भी
दूर हो जाए और इससे कंपनी को भी प्रॉफिट हो सकता है एक्चुअली में। I would like to add one point there. If a city is using river water, it already would have dedicated pipelines. Yeah, sufficient and water. We are not generating any water from. Yes. Yeah, Maybe, but and we are if, not generating any water from our plant to distribute it to the households and for the nearby cities. I think so. Since that. of the task given to because us. एक्चुअली बेसिकली क्या रहता है, रिवर के पास में जो सिटीज होती है उनमें इतना प्रॉब्लम होती नहीं है पानी की। जहाँ तक मैंने हरिद्वार का देखा है, ऋषिकेश के आसपास में देखा है, वहाँ पे कभी पानी की प्रॉब्लम हुई नहीं already had the water. वो क्योंकि हिमालयन रिवर पानी की नीड तो रहती है ना, तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है और जो HPCL के पीपल हैं उनके लिए वाटर प्यूरिफाई करके, तो ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट क्या रहता है, ये चीजें अगर आज यूज करती है, ये चीजें पहले से ही स्टार्ट हो चुकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही कर रखी होती है ये चीजें। एक प्रॉब्लम यहाँ पर कि HPCL के 2 प्लांट है, एक मुंबई रिफाइनरी, एक विशाखापट्टनम में। मुंबई रिफाइनरी पास हिमालयन रिवर है नहीं, वहाँ पर सीजनल रिवर है, नर्मदा होकर जाता है। इधर चेन्नई साइड में गोदावरी कृष्णा रिवर जाता है, तो इन डेट केस दोनों सीजनल रिवर है, मतलब हमेशा पानी कंप्लीटली ज्यादा फ्लो नहीं करता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, अगर वाटर ट्रीटमेंट बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, तो आई थिंक हम लोग को कॉस्ट एस्पेक्ट भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है टाइम हम लोग का तो वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे कि ये तो ready करानी now? पड़ेगी। You want some more time or you are ready to conclude? I think बजट बनाना बाकी है, कॉस्ट एस्टिमेट बाकी है। You get last 5 minutes. Please sum it up, and then after 5 minutes, some of you will conclude. Okay, sir, fine. Guys, अब कंक्लूजन की बात कर लो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज अ वेरी गुड आइडिया। गाइस पहले एक ये जितना भी कॉस्ट लग रही है पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये सोचते कि बनाना क्या है, उसके बाद सर स्टार्ट तो करना है ना, स्टार्ट कहाँ से करना है ये तो डिसाइड पहले ना HPCL प्लांट में जाकर how many of like let me ask a question, like how many of you agree with the water treatment plant that I gave? I agree with what I agree. And what about the park over there? पार्क और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो साथ में हो सकता है। एक फ्लुएंसी वे में होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें लिस्ट अप कर लेते हैं सारे जो हम कर सकते हैं, फिर उनके लिए हम फंड एलोकेट कर देंगे। सारे रख लेते हैं एंड एम्प्लॉइज का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाटर ट्रीटमेंट पार्क, और इसके अलावा और अपने आप से लिस्ट अप बताते जाओ, जिससे गाइस पहले HPCL में जाकर पहले देखना पड़ेगा कि वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि वाटर को yes guys, I think it's time to like agree on a single point and proceed to the expenditure part. As you guys said, most of us agree on the water treatment plant. What are the estimates that you bring to the pipelines and also different chemicals that we use? I want to add one point. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, वो हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, वो हम बोल लेंगे कंक्लूजन पार्ट में। एंड उसके बाद कॉस्ट का कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट देन ऑप्शंस देन कॉस्ट। जो HPCL को भी बेनिफिट करे, ऐसे अपने को ऐसी चीज रखनी है जो HPCL को भी बेनिफिट करे और सोसाइटी को भी बेनिफिट करे कहीं ना कहीं। Then water treatment plant would be great idea, no? Park water treatment plant can be one option. Second idea. Option can also be park. Water treatment plus park. Yes, water treatment plus park. We can agree on the part. Water It depends on the area. Also, it depends on the area, my friend. It's a river. We haven't been mentioned about the area. A lot of area. We have to look into that. I think we should discuss on the cost estimation part. Cost estimation part. Let me speak. So in the park, so adjacent to river, we can, if the area is small also, we can consider this as a walking area. So from that part to it will be some 1-2 kilometers, I expect. So some very less space, but in the width of it will be higher only. So we can use that part as a walking. So from that part to this part, we can use that. I would like to add a point. Like water treatments generally release some bad smell. Like people doesn't like to go there. So let me speak. At my location, near to my location, there is a Mosi. So adjacent to that part, that only they have been constructed a park where we will be able to run. So there have been very technology. So we can bad smell. We can remove that bad smell with planting various plants.
and with this process we can use that as a Guys, park I for think running. I want to Actually, add one so, point. Guys, so we are the park plus we can use that as a recreational. Kiran, guys, I again, want this to is add one it's point. a The park. stagnant water body. It is a flowing water body. So I guess it Yes, not yes, have हमें any bad कॉस्ट एस्टिमेशन कर लेना चाहिए आई 2-3 थिंक minutes Guys, left, हम so engineers को first include कर सकते हैं we for need to cost estimation, क्योंकि हम चार्टर्ड so अकाउंटेंट्स हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसमें अपना okay. नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो So हम इंजीनियर water को इंक्लूड treatment करेंगे, plant सिविल की कितनी Water cost इंजीनियर। है? treatment- I think 50 crore Okay. or more. नो 2 to 3 करोड़ बिकॉज छोटा अगर प्लांट बैठाते हैं, सिंपल से पानी सप्लाई मतलब 5 से 10 लाख का प्लांट बनता है, मान ले तो उसको थोड़ा सा बड़ा लेवल करना पड़ता है 2 से 3 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये मेनली ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसमें ज्यादा कॉस्ट आती है, प्योरीफाई वाले में ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। उसमें प्योरीफाई वाले में ज्यादा कॉस्ट प्योरीफायर की आती है, जो बार बार में जो फिल्टर्स चेंज होते हैं। अगर ये बड़े लेवल पे तो भी देते हैं, तो मेरे हिसाब से 1-2 करोड़ के आसपास हमें कुछ Since कॉस्ट since अपनी it's a और river park की water, cost I think it will not. What cost we spend on the park actually? पार्क में अगर देखा जाए तो अगर प्लांट्स तो बेसिकली अपने को क्या मिल जाते हैं, गवर्नमेंट भी मिल जाते हैं, तो प्लांट पे ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। जो भी कॉस्ट थोड़ा होगी maintain उसका करना थोड़ा park, मेंटेनेंस park, के लिए भी बचाना पड़ेगा। जैसे park will be better. I expect. प्योरीफायर में जो भी फिल्टर्स होते हैं उनमें कॉस्ट आती है, तो बार बार मेंटेनेंस करवाने में कॉस्ट को हमें थोड़ा सेव करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा some part we can keep for the water purify, and whatever that I'm saying that adjacent to that river we can keep this a park, some walking everyday employees will be interested in walking, all of them, so that will be better. So we need to Guys, first I we need want to add it will one be point. dirty location, so we Guys. need to clear that part. So how That's much okay. cost we can spend on the park actually? I think First we need to clean that part, whatever that might be. Some trees will be grown up, so we need to firstly spend amount in clearing that part, and also after clearing we can even New technology plantations. we need to bad smell, we need to remove that bad smell with the technology, with various planting another plants where that will be giving good smell. With that we can build a park and support. पार्क के अंदर place No. We can do. Actually, at my location, they have been actually done that. So after cleaning that part, we can again we need to. That will be taking some 3 months time. So with this, ये फाइनल Guys, मैं एक suggestion दूं। प्लांट और वो बनाता है, तो अब इसकी पोस्ट बनाते हैं हम। सुनता ही नहीं है। Guys, मैं एक suggestion दूं। बिल्कुल। I think हमें टीम में इंजीनियर्स को इंक्लूड करना चाहिए फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन। बिल्कुल। एंड उनका एंड जो भी हमारे ऑप्शंस हैं, हमने 2-3 ऑप्शंस रखे हैं, आई थिंक वो बेटर पोजीशन में है कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए, तो हमें उन्हें टीम में इंक्लूड करना चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम सर्वे करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं और उन अलग अलग ऑप्शंस के लिए हम क्या कॉस्ट रहेगी उसके लिए इंजीनियर्स को इंक्लूड करेंगे टीम में। तो कोई और ऐड करना चाहता है इसमें पॉइंट? तो हम उसके लिए हम चेक करेंगे कि कितनी सप्लाई डिमांड होगी, एक्चुअली जितनी डिमांड होगी हम उस हिसाब से और की मतलब जो स्ट्रेंथ होगी आसपास के लोगों की, कितने लोग एक्चुअली में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हम डेवलप करेंगे। इसमें एक और और तो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से डेवलप किया जाएगा आई थिंक, जो भी पार्क वगैरह की सोच रहे हैं। एक्चुअली हम लैंड को इसलिए भी तो यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय के अकोमोडेशन के लिए, जैसे अगर बाकी सब चीजों के लिए भी यूज हो रहा है तो अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि HPCL लोकेशन में के पास में है। But it was initially decided that if it is a building near adjacent to the river, it is not strong. It will be risk. So for this park, we need to approach the municipality of that locality. So with their help, we need to after obtaining permission, we can take the cost from them also. They will be HPCL लैंड खुद की जमीन पे तो पार्क बना सकता है। नहीं बना सकता, पड़ता। और इसके अलावा for that also गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहूंगा कि इंजीनियर आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है, तो एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए हमें अभी। I think water purifier in the park will be a good option. That will be good option. So we can spend some. Now we have to talk about the cost estimation of these two. So firstly we need to clean that part. बट हमें रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी ना पहले। जैसे एरिया पे डिपेंड करता है एरिया कितना बड़ा भी है, कितना बड़ा है वो। हम लोग को वेंडर से भी कोटेशन लेना चाहिए कॉस्ट के लिए। Could you reach some consensus? Sir, can I conclude on my part? Okay.
Who wants to conclude? Yes. Me, sir, Kiran. Okay, go ahead. Okay. Some part. Okay. I would like to take 2 minutes to conclude my point. Actually, HPCL is a refinery company, and these companies are generally located in the outskirts of the cities, very near to the villages. And the villagers have a very negative impression on these refineries because they would be releasing a they would have an idea that they would be releasing toxic substances into the river, and they are afraid of their cattle being like toxidized, or the marine life which they depend on, and also their agricultural lands. So to overcome this negativity, we can think of installing a water treatment plant that would not only be very useful for our society, and also to the plant and marine life around us. So I would suggest installing a marine water treatment plant, and the cost estimation I would be thinking of around 1 to 2 crores. Then I'll leave my friends to conclude. So okay, if the location, if that land is some higher part only, we can use, as you are saying, we can refine that water refinery. We can use for the cleaning purpose, and some part we can use for the water taking and park for. First, we need to spend that amount on the cleaning that space. So we can get the quotation, like first we need to spend some 5 to 5 lakhs on this cleaning part, and whatever you're saying, we need to estimate all that part. As you can tell the bifurcation like that, or we can directly some 1 or 2 crores you are saying like that. Sir, I would like to conclude on behalf of our team. So sir, the task was given that the जो लैंड है हम लोग जुरिडिक्शन में है, और रिवर के किनारे, जैसे रिवर से एडजेकेंट है एचपीसीएल प्लांट का, तो सबसे पहले से हम लोग को ये डिटरमाइन करना होगा वो रिवर से सीजनल है कि सर वो ऑल टाइम रिवर है, जस्ट लाइक हिमालयन रिवर से हमेशा के लिए होता है, और सीजनल रिवर कभी कभी वाटर जब सीजन होता है रेनी सीजन, उसके बाद सर एचपीसीएल के जो प्लांट है मेनली एक मुंबई में, एक विशाखापट्टनम में, एक बठिंडा पंजाब में है, बाकी बेंगलोर में है। तो देखते तो यहाँ हिमालयन रिवर कोई भी नहीं आता है, तो यानी सारा का सारा सर सीजनल रिवर होगा। सीजनल रिवर में सर कभी कभी बरसात में से फ्लड का चांसेस होता है, तो अगर फ्लड का चांसेस रहता है वहां पर फ्लड प्रोन एरिया पड़ता है, तो बेटर होगा कि जो कॉर्नर में पेड़ लगा दे, क्योंकि वो पानी का फ्लो को धीरे कर देगा, रोक देगा, प्लांट में आने से रोक देगा, और अगल बगल विलेज है तो उसको भी सिक्योर करेगा। इसके अलावा सर अगर वो नहीं तो हम लोग को जैसा टीम मेंबर सब एग्री किए थे हम लोग की वहाँ एक छोटा सा स्मॉल पार्क बना दें और उसमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लोग को म्यूनसिपैलिटी प्लस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसका हम लोगों ने जैसे कॉस्ट एस्टिमेट लगाया 2 से 3 करोड़ मशीनरी का आ जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट का। इसके अलावा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका आ जाएगा, मान लेते हैं करीब 10 से 20 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। इसके अलावा सर जब पार्क डेवलप करेंगे तो उसके लिए करीब 10 से 15 करोड़ का फंड चाहिए होगा, क्योंकि मान के चलते वहां पर कि करीब 100 एकड़ के आसपास का एरिया होना चाहिए कम से कम पार्क डेवलप करने के लिए। और जो प्राइस सर कोटेशन निकाले इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म करने के लिए हमको इंजीनियर लोग को बुलाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा किस टाइप का पार्क बनाना होगा, किस टाइप का मशीनरी बैठाना होगा, अलग अलग वेंडर से कोटेशन भी लेना होगा मशीनरी के लिए, और प्लस वेरियस अल्टरनेटिव इंजीनियर लोग भी सजेस्ट कर सकता है, वो मतलब करेगा, उसको भी हम लोग को देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी। थैंक यू सर। Sir, I would like to conclude this group task. The task given to us is there's an land adjacent to the HPCL plant. There's a river which is flowing adjacent to this land, and the task given here is we have to utilize this land, and we have to estimate the cost for this for the purpose what we are going to utilize this land. And our team has decided to have a water purifier, since there is a river water. If we purify that, it will be very useful for our HPCL employees also, and if we plan, we can also provide water to the nearby places also. And it is also decided that the second thing is, since it is a river flowing adjacent to the land, that river scenery will be a very good, calm and peaceful place, and it will be a beautiful thing to refresh ourselves. So a park kind of area will be a very good option, we thought. And coming to cost estimation,
it'll be a good idea if we give it to vendors for receiving the quotations. And our estimation would be like it will be about 15 to 20 lakhs to do the entire activity. Thank you. Okay, so let me again share with you the task which was given to you. What was this task we have here? That was the situation I think given to you. There's a river which is flowing adjacent to plant, and river base area is falling within this, and make detailed project reports suggesting how this area can be used. Steps to develop this area as well as cost estimation. How this area can be used. That was the topic given to you, and cost estimation. So let me tell you, you should not give any particular hypothetical answer or hypothetical area. You people were giving some ideas what you want to do. I was seeing some kind of irrationalities and some kind of illogics in those things. I give you example here. 100-acre plant park you will develop, as Rajveer said. 100 acre, you know the land 100 acre, it's a huge actually. 100 acre बहुत ज़्यादा होता है, उसमें IIT बन जाता है पूरा एक. और इसे 100 डेसिमल बोलना था. कितना बोलना? How much you want to make? You are going to make more bigger than Mughal Garden of President's House in Delhi. You know, 100 acre is huge. 100 डेसिमल बोलना था, sorry. Then you are creating treatment plant. Do you think HPCL will be sitting without treatment plant, and in the additional area they want to develop it now? So suppose you want to make a treatment plant. So what HPCL has as of now? No treatment plant. And why you are assuming that the river is dirty and river is not good and water is not clean and you need to clean it, and what you will do after that? So you need to give logic. And then you said 2 to 3 crore lagega treatment plant banane mein. From where you got this 2 to 3 crore, you tell me. Or for that matter, estimation. How do you do estimation? Estimation cannot be done, in your imaginations. Estimation, there is always a way. You need to think of. Yes, I agree that you will invite some quotations, and estimation can be done. So it depends that if you want to develop this, then you should know how much budget we have. That was the right approach. I mean, how much budget we have. On the basis of that only you will spend money. Because suppose something exceeds your budget, you will not do that. You will have a couple of options on table, but you will not choose the options which will exceed your budget. So first step will be how much budget you wanted. So there are certain thumb rules I gave you in the previous 2 group tasks. I told you that you make a team and make an interdisciplinary team. So HPCL is very, it's a big public sector. It has lot of professionals. You have professionals, like technocrats, civil engineers you have, architect you have, chartered accountants you have. There, I mean, entire interdisciplinary team. Who stops you from making interdisciplinary team and then do brainstorming? That is, I told you in the first and second GT. If you do that, it will be really helpful to you. Those steps, the steps which are being told to you in each group task, you people are not using those. So friends, I think the first thing we should do is like, we should try to make interdisciplinary team, putting all the professionals on, on board, and do brainstorming session first. And brainstorming session should be done in 2 lines. Number 1, what do we want to do with this? Number 2, how much cost will be incurred and do we have budget for that? These are the 2 major things you have to decide. करना क्या है और कितने पैसे लगेंगे? ये 2 चीज तो है. क्या करना और कितने पैसे लगेंगे? These are 2 things. उसके लिए करना क्या है, कितना पैसा लगेगा, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे पास कितना लैंड पड़ा है. How much land do you have? So why you are saying 100 acre land? You just ask in the brainstorming session, how much land do we have? And what is the requirement of HPCL? First is the need of HPCL. Maybe HPCL people want that, yes, there should be some playground. Sir, I have a doubt here. Brainstorming session, you mean that the time that we are given to understand this task, sir? It is like a discussion, where you ask everything and you discuss among yourself. That is called brainstorming session, Okay. Chintan, Manthan, I don't know, Hindi terms. These are the terms of Hindi, Chintan and Manthan karna. All these political parties, they do Chintan and Manthan before elections. How we have to, strategy we have to make and all, what we have to do. So that kind of discussion
Sitting on the table, round table, you have to discuss a lot. You have to ask everything. You have to question everything. Why, when, where, how, all the questions, and that also you put in your kitty. I mean, next time, brainstorming session, and asking all the questions. Why recreation? Why park? Why not this? How? Where? I mean, ask all these questions to the team on board. And the moment you do this, you keep on getting the answers. You keep on dividing these minute questions. That is a Japanese technology, Japanese guys, whenever they want to do something, they ask a lot of questions. And unless until they get the answers to those questions very meticulously, they don't start anything. So you need to, in detail, you need to get the, information. That is something which is required. Now, I think with the, before I go forward, and somebody was saying banquet hall is to be created, Simonson banquet hall we will create. That is okay, but that is okay, but you should have added a line that's, friends, let's see what HPCL need. It may be possible that in the colony of HPCL, you don't have very big banquet hall for marriage and functions and all. If that is a need, and how do you know the need? Team banao, HPCL के लोगों से पूछो, थोड़ा सर्वे करो. This is a term is survey also. हाँ, सर्वे करना है और उसको बैंक्वेट हॉल की रिक्वायरमेंट है तो आपको करना है, बजट भी अलाउ करना चाहिए तुम्हें. And why banquet hall only for the people of HPCL? Why not generating the resource? You guys are chartered accountants. You should create money for organization. You created a banquet hall, and then you started giving it on rent on the people in the vicinity, city people or something. So that becomes asset for you. You are earning money through that asset. Yes. There is no very big banquet hall in the vicinity. So when priority will be given to the people of HPCL, but then if they are not requiring it, let's book that banquet hall of HPCL for city people. Whenever they have to get married, they one night you can earn lakhs of rupees, 4 lakh, 5 lakh a night for marriage. So why can't you create resource flow? That is what I want to see, your financial prudence. Are you earning something for HPCL, or you are only wasting money of HPCL, or you are creating something which will never be used? None of you thought of water games. Did you talk about water games on the river? So water games on the river can also be one good idea. I mean, boating or something like that. Anyway, let me tell you who are in green belt, who are in green zone, and who are in the red zone. Red zone will be eliminated, and green zone may not be eliminated. So let me tell you this: Kiran, Rajveer, Yogender, Mayank, and Divya. They are towards the green zone. Kiran, Rajveer, Yogender, Mayank, Divya, they are on the green zone. You may qualify. Shiva, Vasim, Rameshwar, Priyanka, Simran, you may not. So you need to basically think of where you are, and that is as of now. And that is as of now. But you have to learn a lot. Those who are in green zone, don't think that you are in actually green zone. Why? Because today's discussion on the basis of that. Right? So actually your level should be more. The person who wants to conclude, from the very beginning, he should be meticulously writing the points. If you want to conclude, keep writing the points, and that is the best thing. In your group, you should conclude. Your competition will not be with you people. You understand that? Your competition may be with others. So from the very beginning, start writing very meticulously on your copy. And keep asking the friends, keep asking the others. Okay, friends, so are we all agreeing that this sir, I have a doubt. Sir, can we also use it for agriculture purpose, so that it will be asset, मतलब agriculture करके फिर उसको sale किया तो वो भी तो हमारे लिए as a earning का purpose हो जाएगा. Profitable actually. Organic agriculture. You cannot hire 10 farmers whose salary are more than what you are earning through the crops. Because HPCL का main काम नहीं है agriculture. Agriculture HPCL का main काम नहीं है. करोगे सर मैंने एक accommodation वाला point दिया था सर, वो ठीक है या नहीं? देखो, accommodation river के किनारे पे नहीं हो सकती है. फ्लड आएगा तो accommodation के साथ तुम भी अंदर ही चले जाओगे. Number 1. Number 2, accommodation may already be there. So need of HPCL people is to be identified.
It is not any land area. It is a riverside land area. River का word का meaning था. Suppose I remove the word river. Let me share once again with you that. एक डाउट है मुझे. हाँ जी. सर जब भी ये सब डिस्कशन चल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि सब डिबेट कर रहा है. कोई बोल रहा था तो अगर मैं कोई पॉइंट रख रही थी या कोई और रखना चाह रहा था तो कुछ लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे. तो सर आप ये एक बारी कर दीजिए. देखो आपको सिंपल ऐसी सिचुएशन आएगी वहां पे. अच्छा. आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपना पार्ट ढंग से करना है. ओके सर. आप उसको डिसिप्लिन नहीं कर सकते. मैं यहाँ पे सबको बोल भी दूं, उससे क्या होगा? एक्चुअल में तो नए बच्चे मिलेंगे वहां पे आपको, और ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा दिन दुनिया का चल क्या रहा है. They will be knowing nothing actually, I tell you. But you should know something and you pass it. सर मान लीजिए इन द केस वहाँ कोई इस टाइप का बच्चा आ गया और उसको हम समझाए कि देखो बाबू कंपटीशन हम लोग से नहीं है, दूसरा टीम से है. थोड़ा कोऑपरेट तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जब तुम्हारा ये स्टार्ट होता है ना, जीटी वगैरह होता है, जीडी, तो तुम एक दूसरे को जानते हो कि इनके साथ तुम्हारा है, इनके साथ तुम्हारा जीडी जीटी है, ये तुम्हें पता होता है. रूम में जाने से पहले, तो रूम में जाने से पहले तुमको समझा देना कि बाबू हमारा जो है कंपटीशन वो आपस में नहीं है, तुमको बोल देना. और देखो कितना समझते हैं वो लोग, लेकिन कई नहीं समझते हैं. उनको लगता है तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है इसमें, तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे. अंदर से इसको नहीं समझाना है ना, मतलब केवल मान लेंगे, केवल मान लेंगे, केवल नहीं मानेंगे. अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है बस. ऑब्जर्वर सुने. I have a doubt, sir. ऑब्जर्वर सामने नहीं बोलना नहीं है सब. Last year, no, in HPCL it was eliminating round. GT was there and that is eliminating round. अभी भी elimination round ही है. अभी भी है ना. हाँ, HPCL में होता है eliminating round. तुम आगे नहीं जा सकते इंटरव्यू में अगर eliminating है तो. There were 4-5 students. There were 4-5 students who were very good actually. रैंक अच्छे थे उनके. HPCL में रिटर्न में भी अच्छा मार्क्स था. उनके ग्रुप में 2 लड़के आ गए, उन्होंने किसी को बोलने ही नहीं दिया. सारे का सारा ग्रुप सिंक कर गया. एंड दे वर गुड एक्चुअली. उन्होंने बोला सर उन्होंने बोलने ही नहीं दिया, वो लड़ते ही रहे, वो तो डूब ही गए, सबको डुबा दिया उन्होंने. सो ये एक्स फैक्टर होता है, ये किस्मत होती है, और ये तुम्हारे हाथ में नहीं होती. सो यू हैव नो कंट्रोल ऑन दीस थिंग्स. सो आप क्या बेस्ट. यस sir. One more thing, sir. I have given my answer as a mechanical engineer. Is in IOCL the GT. Like if we talk about parks and all, it would be somewhat misleading, sir, to the point. Like they expect the answer as a mechanical engineer from us, but not like a general. No. They don't expect your answer as mechanical engineer or something. They expect your answer as professional. That's it. Not as a mechanical engineer. So there is no point of. Tell me, when mechanical engineer becomes director, what do you think? He will be making an entire organization, mechanical organization. What do you think? No, sir, manager. So they don't expect that. They want you to develop the acumen. You guys are to develop financial acumen. These chartered accountants, they are to develop the technical acumen. Then only you will understand each other. No, otherwise you will never make a team. So they want some common sense from you, nothing else. No, you tell me, if I say, let's invite the quotation and let's see what is the budget estimate. Do you think this is the ambit of chartered accountant only? Engineers also do that. And even doctors do that when he's running, he's a superintendent of the hospital. He's to invite the quotations. He's to talk to suppliers. So these are the professional acumen which is expected from you. Decision making. How do you make the decision? I mean, are you capable to make decision? That is a question actually. So if I say, okay, you go and develop that area, you will make blunders, if you don't have decision making skills with you. If you don't know how to proceed, you'll make blunders. Maybe you'll spend that hundreds of crores or rupees or 5 crore rupee on something which will not be used later on. So the question will come, why did you develop it? Sir, I thought it will be there like that. You thought, you did not ask others. You did any brainstorming? No, sir. You thought that there will be requirement of park, which nobody is going because people fear going there. Now nobody is going, and you spent 5 crore on that. So, sir, I said that point that we should first see what is the requirement of that land. Do we have any requirement specifically in the company to utilize that land in a better way? So let me give you the solution. I think I have written last time. I had written this solution also. What can be done? So maybe these are some of the points which can help you. You want to use the water of the river also, or you want to use only area.
Another point maybe for discussion can be, they are to be used, the facilities which you want to use are to be used by HPCL guys only, or they are to be used by outside public also. Do we want to use the area for exploring commercial viability? Can we get benefit from there, like banquet hall, for giving rent out banquet hall to others? Water of river can be used for drinking water after purification. If we think there is a water shortage in HPCL colony, but if or these kind of things are to be kept. If there is a shortage, then only you will make it. No, we need to find access route to the river basin from HPCL colony. Yes, आपने area develop कर दिया, but there is no access route. Why you are developing that area? Can we develop, river basin for recreational activity, water sports or something? Banquet hall can be developed for community gathering parties. Yes, these points could be done. This point, then this, the budgeting part I did not include that time, but these are some of the points from where you can start. So you need to think some really good points you need to have in mind, ask many questions, and then you start proceeding. So friends, before we give any conclusion, before we come to the solution, let's do brainstorming session and let's ask some questions to us. So are we going to use water also, or only area? If we are going to use water, water is what we are used for drinking purpose, or only for agriculture or something like that? So purification is required or not? Are we going to develop the area for commercial purpose, only for HPCL, or outside HPCL? The moment you start asking these questions, many things pop up in your mind and you hit a really good solution. That is how it is to be done. Develop that thinking actually. Sir, that's what, sir. Ideas are not flowing into. They will come. Ideas do not flow. Flowing of idea, do you think is the basically thing related to mind? Answer is no. It is related to practice. Ideas will flow if you do practice. There is a sufficient practice for available for you guys. There are more than 200 group tasks on the panel of YourPedia. More than 200 group tasks. So you can listen to those group tasks and you can basically develop that acumen of participation in group tasks. Sir, एक doubt सर जो 20 मिनट्स का होता है पहले, तो सर उसमें भी वो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं जब अपना पॉइंट रखते हैं, या लास्ट 10 मिनट्स में पॉइंट रखना होता है? You are always under observation. The moment you step inside the plant, you are under observation. Even if you are eating, even if you are having breakfast, have properly. You are under observation all the time. They observe you on the camera outside. Sir, team में अगर they even ask you this question that when you were sitting outside, you were talking to your neighbor. One fellow went outside and you started talking to him. So what were you talking to him? That kind of question they also ask you. सर एक डाउट है सर, जैसा कि सब बोलता है होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर वैसा टीम में आ गया तो डायरेक्टली सरेंडर तो नहीं कर सकता, कोई तो सॉल्यूशन होगा ना सर? मतलब वैसा टीम में बंदा आ ही गया तो ट्राई करो, उसको बात करने की ट्राई करो, उसको बोलो कि ओके योगेंद्र प्लीज गिव चांस टू अदर्स आल्सो, दैट यू कैन से। उसके बाद भी अगर वो वैसा रहा तो फिर तो तुम अपना पॉइंट बोलो, तुम उस पे भारी पड़ो। और सर जिसने कंक्लूड किया या इंट्रोडक्शन दिया उसने अच्छे से नहीं दिया और बाकी सबने पॉइंट्स अपने ठीक ठीक रखे थे, तो फिर कंक्लूजन एक को ही करना होता है, बस सबको नहीं करना चाहिए। नहीं सर, पॉइंट सबने रखे थे, कंक्लूड करने वाले ठीक से नहीं रखा, सबको लॉस होता है। कंक्लूड करने के बाद हम ये बोल सकते हैं ना कि कोई और टीम मेंबर कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है, या फिर कंक्लूजन ये ऑब्जर्वर बोलता है, आप नहीं बोल सकते। मतलब कि मेन अगर इंट्रोडक्शन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर कंक्लूजन कोई खराब देता है तो पूरी टीम को लॉस होगा, वो सारी टीम को लॉस होता है, एंटायर टीम लूजेस अगर आपने ढंग से नहीं किया चीज को। सर इसके लिए पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिएगा कि कौन कंक्लूजन देने वाला है। ये कंक्लूजन ये आप डिसाइड नहीं करते, मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरू से नोट करते जाओगे तो एंटायर ग्रुप विल एक्सेप्ट यू एज लीडर टू कंक्लूड, ट्राई टू डू दैट। आप शुरू से लिखते चले जाओ, फिर जब वो लास्ट में होता है कौन कंक्लूड करना चाहता है तो सबको पता होता है कि यू आर मेटिकुलसली आस्किंग देम आल्सो एंड राइटिंग आल्सो, राइट, एंड देन यू कैन कंक्लूड इट। सर एक बार फाइनल कंक्लूजन से पहले तो हम सबसे एक बार पूछ सकते हैं ना कि किसी का पॉइंट रह तो नहीं गया करके, ये तो हो सकता है ना? नहीं, आपने एक बार कंक्लूजन कर दिया फिर आपने किसी को नहीं पूछना है, आपने कर दिया। फिर उसका कहने का मतलब है कि पहले कंक्लूजन बोलने से पहले वो बोलेगा आपको कंक्लूड करो, तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव एंड यू हैव टू कंक्लूड।
You are not to play the ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं ना ये चीज के, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और ये बोलने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूं ऐसा। सर एक्सक्यूज मी सर, मैंने बताया आप आफ्टर सम टाइम यू कीप ऑन डिस्कसिंग। ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एग्री टू दिस पॉइंट? सो कैन आई राइट दिस? डू यू ऑल एग्री टू दिस पॉइंट? इज दिस ओके? आर वी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? आर वी एग्रीइंग टू ऑल दिस पॉइंट्स? सो वो करते रहो, देन दे अंडरस्टैंड कि यू आर नाउ heading in that direction. With your permission, can I leave because tomorrow morning I have class? Yes. Thank you. सर अगर कंक्लूजन सही नहीं हुआ लेकिन किसी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे तो क्या वो ऑब्जर्व किए जाएंगे? Yes, they are observed. Like your banquet hall was observed, point was observed, but yes, you did not think of making it commercially viable. Otherwise, point was good. तो मैंने 2-3 और ऐड किए थे, वैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट सर्वे करके एंड हम सिविल टीम बना सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आई थिंक ये 3-4 पॉइंट्स तो interdisciplinary teams, you know, they are good. Right? So then I think we ended up here only today. It's quite late. So actually, sir.